So let's begin our session. Today's news are current affairs 20th October 2016. Paper 2 topic bilateral, regional, global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. India, Algeria, Fertilizer, JV. So let us first understand what is this news. India is keen to join hands with Algeria to explore the possibilities of setting up a multi-billion-dollar fertilizer project. तो हमारी कंट्री ने किसके साथ अल्जीरिया के साथ हैंड्स मिलाए हैं so that we can set up a multi-billion-dollar fertilizer project, bearing in mind the phosphatic reserves available in the North African country. North African countries के पास बहुत ज़्यादा phosphatic reserves है, which is estimated to be more than 5 billion tons से भी ज़्यादा है. A meeting in this regard was also recently held between the two countries. ये phosphatic reserves हैं क्या? ये phosphatic reserves from phosphorus rocks से निकलते हैं एंड इसमें जो कंट्रीज़ में ये जो रॉक्स मिलते हैं वो मोस्टली है चाइना, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, यूएस, जॉर्डन और जितनी भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है हर जगह ये फॉस्फोरस पाया जाता है. बैकग्राउंड ये है द एस्टिमेटेड फॉस्फेट रिजर्व्स इन अल्जीरिया इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 5 बिलियन टन्स, जो हमने भी पढ़ लिया, एंड पॉसिबल इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर. इंडिया का इन्वेस्टमेंट होगा इस सेक्टर में इज एक्सपेक्टेड टू बी $5 to $7 billion. तो हमारे इस मूव का, इस इन्वेस्टमेंट का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मूव: अराउंड 90 to 95% फॉस्फेट बीइंग यूज्ड बाय इंडियन फर्टिलाइजर्स. हमारी कंट्री कितने 90 to 95% फॉस्फेट यूज़ करती है. कंपनीज इज इम्पोर्टेड. हमारी कंट्री इतना 90 to 95% फॉस्फेट इम्पोर्ट करती है एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई. The price of fertilizer in India is expected to come down along with subsidy burden if the talks between the two countries lead to setting up of a joint venture mega fertilizer company in Algeria. तो हमारी फर्टिलाइजर्स की प्राइस बहुत कम हो जाएगी, हमें हमारा सब्सिडी बर्डन भी कम होगा, जो कंट्री को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, वो कम हो जाएगा. तो इससे ये इन दोनों से हमारे ये जॉइंट वेंचर से हमें बेनिफिट होगा. India currently imports raw phosphate resources from a number of African countries, जैसे Tunisia, Jordan, Egypt, Syria, as also from Russia, Canada and Israel, among others. So हमारे certain key facts हैं यहाँ पे. Indian fertilizer industry is producing about 12.28 million tons of nitrogen and 4.37 million tons of phosphatic nutrient production. इंडिया का रैंक आता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में सेकंड. तो फर्स्ट कौन सी कंट्री है? चाइना. एंड थर्ड इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर. हम इंडिया थर्ड रैंक में आते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में, और फर्स्ट आता है चाइना, देन सेकंड आता है यूएस. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय 2016-17, fertilizer demand in the country is projected to increase to about 336.77 lakh ton of urea, 124 lakh tons of DAP, and 59.48 lakh tons of SSP, and 47.93 lakh tons of MOP. So इतना हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रोजेक्टेड है कि इतनी डिमांड बढ़ेगी by 2016 and 17. Now paper 2 topic functions and responsibilities of the Union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. Kaveri Water Dispute Tribunal 2 verdict disappoints AP and TS. So Krishna Water Dispute Tribunal second, headed by Justice Brijesh Kumar, has decided to confine the reallocation of Krishna water between Andhra Pradesh and Telangana. तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है क्या? ये डिस्प्यूट था कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में, और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट्स के बीच में था.
एक्चुअली ये पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा के बीच में था, बट आंध्रा का बाइफिकेशन हुआ तो तेलंगाना भी इसमें इंक्लूड हो गया. की फैक्ट्स है, in its recent verdict delivered, the KWDT, that is Krishna Water Dispute Tribunal 2, decided to maintain status quo. Status quo का मीनिंग क्या होता है? Status quo एक लैटिन वर्ड है, ये फ्रेज है. इसमें existing states of affairs with regards to, इसमें होता है state of affairs with regards to social and political issues जो होते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं status quo. On the allocation made to upper riparian states. ये upper riparian states क्या होते हैं? States ये जो through which a river passes, जो भी states आते हैं उसमें. और इसका एक fixed definition ये होगा literal sense में कि allocating water among those who possesses land along its path. जो भी river के पास ये होता है. Upper riparian states Maharashtra and Karnataka and take up further action on distribution of water to Telangana and Andhra Pradesh out of the allocation made to the erstwhile United States. The verdict would mean that the project-specific allocations and other operational protocol would be confined to the two states, much against their demand that allocation be made afresh among the four riparian states. Background ये है कि आंध्र प्रदेश and Telangana had submitted pleas on the need to reallocate water among the four states consequent on the bifurcation of the erstwhile Andhra Pradesh. They contended that the allocation in 2013 was made before the enactment of the Andhra Pradesh Reconstruction Act. ये जितने भी allocation हुए थे 2013 में हुए थे, तब आंध्र प्रदेश का reorganization नहीं हुआ था. Then that even Parliament had given its endorsement for reconsideration of the allocations made before bifurcation. The two states had argued that Section 89 in the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Two states ने क्या argue किया? Section 89 in the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 was implicitly incorporated to ensure reallocation among all the riparian states. Krishna Water Dispute Tribunal. Krishna Water Dispute Tribunal KWDT was set up under Interstate River Water Dispute Act 1956 to adjudicate upon the water dispute regarding the interstate river Krishna and river valley thereof. The tribunal gave its award in 1973, while the tribunal had in its earlier report detailed two schemes, Scheme A and Scheme B. The final award only included Scheme A and Scheme B was left out. Scheme A pertained to division of the available water based on 75% dependability, while Scheme B recommended ways to share the surplus water. तो स्कीम ए और स्कीम बी थी जो 1973 ट्रिब्यूनल ने डिसाइड की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये दो स्कीम्स में हमने ये डिवाइड किया है. फर्स्ट जो था स्कीम ए को हमने इंक्लूड किया एंड स्कीम बी को हटा दिया गया. स्कीम ए में ये था कि वाटर को 75% डिपेंडेबिलिटी के अनुसार डिवाइड किया जाएगा एंड स्कीम बी में ये था कि सरप्लस वाटर के अकॉर्डिंग शेयर रिकमेंड किया जाएगा. The KWDT in its award outlined the exact share of each state. The award contended based on 75% dependability that the total quantum of water available for distribution was 2060 TMC. This was divided between the three states in the following manner. महाराष्ट्र को 560 TMC गया था, कर्नाटक को 700 TMC and आंध्रा को 800 TMC. The review of the award. The tribunal in its first award provided for a review of its award after 31st May 2000. However, no such review was taken up for more than 3 years after that. No such review. कोई review नहीं हुआ. More than 3 years के बाद भी ये कोई review नहीं हुआ. And in April 2004, 2000 में first हुआ था. 2004 में फिर हुआ. The second KWDT was constituted by the Government of India
फॉलोइंग रिक्वेस्ट बाय ऑल 3 स्टेट्स। तीनों स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया तो फिर सेकेंड KWDT हुआ। Second Krishna Water Dispute Tribunal gave its draft verdict on 31st December 2010. The allocation of available water was done according to 65% dependability. पहले 75% था, फिर 65% dependability में कर दिया, considering records of flow of water for past 47 years. Flow of water देखा गया कि 47 years से कैसा record चल रहा है. According to KWDT-II, Andhra Pradesh got 1001 TMC, that is 1000 TMC of water, Karnataka को 907 TMC and Maharashtra को 666, that is 666 TMC. Next review of water allocation will be after the year 2015. अब सोचिए कि मेन रीज़न, रूट कॉज क्या है कि ये इतना डिस्प्यूट हो रहा है। साउथ की ऑल रिवर्स जो है ओरिजिनेट इन वन स्टेट, एक स्टेट में ओरिजिनेट होती है, फ्लो थ्रू आउट द बाउंड्री ऑफ अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट की पूरी बाउंड्री में ये फ्लो करती है, एंड इट्स माउथ इज इन अनदर स्टेट, उसकी माउथ है वो अनदर स्टेट में आ जाता है। तो यही एक रूट कॉज है ये साउथ के रिवर्स में ये प्रॉब्लम और डिस्प्यूट्स आने का। और एक और है कि साउथ में मोस्टली हमारे पैडी क्रॉप मतलब बेड है, इसका बहुत बड़ा कल्टीवेशन होता है, पैडी का कल्टीवेशन होता है, जो कि पैडी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और क्यों? क्योंकि इस क्रॉप के लिए आपको स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दिस रिक्वायरमेंट कैन ओनली बी फुलफिल्ड इफ़ यू हैव इनफ वाटर। ओके, नाउ पेपर 3 टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. इसमें है green train corridors. The Indian Railways has declared the Okha Canalus 141 kilometers and Porbandar once Jalaya 34 kilometer sections of Gujarat in Western Railway as the green train corridors. ये green train corridors में है गुजरात में। मैं आपको इसका मैप में दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। What are green train corridors? ये है क्या? Green train corridors are sections of the railways which will be free of human waste on the track. तो tracks में human waste नहीं होगा। How is it being achieved? ये कैसे achieve होगा? This is being achieved by the installation of bio toilets in all coaches of Indian Railways. इंडियन रेलवेज के हर कोच में बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। बैकग्राउंड ये है, रेलवेज हैव टेकन अप अ मैमोथ टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन डिस्चार्ज फ्री बायो टॉयलेट्स इन ऑल इट्स कोचेस टू मेक द एंटायर रेलवे ट्रैक अ ग्रीन कॉरिडोर बाय 2020. Railways have already provided around 48,000 bio toilets in about 14,000 passenger coaches. ऑलरेडी हमारे कितने 48,000 बायो टॉयलेट्स हो चुके हैं। द 114 किलोमीटर स्ट्रेच इन तमिलनाडु बिटवीन रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम ये है, एंड मदुराई ये हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज फ्री ट्रेन कॉरिडोर and was formally inaugurated as the first green corridor in July. So PT में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से फ्री ट्रेन मतलब वेस्ट डिस्चार्ज फ्री ट्रेन कॉरिडोर्स कौन से Accordingly, 10 passenger trains consisting of 286 coaches moving over this section have been provided with bio toilets. But ये bio toilets होते क्या हैं? The technology of environment friendly bio toilets has been developed jointly by the Indian Railways and the DRDO, that is Defense Research and Development Organization. ये दोनों ने मिलके ये बनाया है through an MOU, Memorandum of Understanding. These toilets function in a manner that the human waste is collected in tanks below the toilets and the same is disposed by the use of various bacteria. Now there are some facts for prelims. International Conference on Voter Education. The first ever global conference on voter education titled Voter Education for Inclusive, Informed and Ethical Participation
is being held in New Delhi. It is being organized by the Election Commission of India in association with UNDP. Election Commission of India किसके साथ? In association with UNDP. Motto है इसका No voter to be left out. Left behind. एक भी वोटर हमारा छूटना नहीं चाहिए. This conference represents nearly 40% of the world's population under a single roof, bears a testimony to the importance of the conference on the world stage. ये एक international conference था. People are at the center of focus of this conference and deliberations would be held in great detail so as to adopt best practices across the world to ensure voter education and maximum electoral participation of the people. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का participation हो सके in elections. Participants are also planning to establish a global knowledge network on voter education. Voice.net, which will be an innovative wide platform to share knowledge, resources, interact on discussions, board, sharing platform for events and practices in various countries, and also extend knowledge and resource support to all stakeholders. Now, second joint tactical exercise by India and China. As part of the ongoing initiative to enhance interaction and cooperation between India and China के बीच में cooperation बढ़ाने के लिए under the provisions of Border Defense Cooperation Agreement 2013, the Indian and Chinese Army recently held second joint exercise Sino-India Cooperation 2016. ये second हुआ है Sino-India Cooperation 2016. ये कहाँ हुआ था? लद्दाख में. During the day-long exercise on humanitarian aid and disaster relief, a fictitious situation of earthquake striking an Indian border village was painted. Thereafter, joint teams carried out rescue operations, evacuation, and rendering of medical assistance. तो इसमें एक सिचुएशन बनाई गई जिसमें कि अर्थक्वेक हुआ और इसमें कैसे टीम रेस्क्यू करी, कैसे इवैक्यूएशन हुआ, मेडिकल असिस्टेंस कैसे दी गई. दे कैरिड आउट दीज थिंग्स. द एक्सरसाइज इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन. ये किस लिए किया गया था? सो दैट द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस along the LAC in eastern Ladakh ये बढ़ सके. The joint exercise complements the hand-in-hand series of India-China joint exercises and the effort of the both nations to enhance cooperation and maintain peace and tranquility along the border areas of India and China. अब हम लास्ट न्यूज़ देखते हैं. INS Tihayu. INS Tihayu के बारे में जानते हैं. ये क्या है? Indian Navy has commissioned the highly maneuverable fast attack craft INS Tihayu at the Eastern Naval Command. Maneuverable का मतलब होता है a movement or series requiring skill and care. कोई भी ऐसी चीज़ तो हम इसको maneuver बोलते हैं. maneuver. So इसमें है क्या? तिहायु की आप पिक्चर देख सकते हैं. ये ऐसा है. Okay. INS Tihayu is the second ship of the four follow on water jet fast attack craft FOWJFAC being built by Ms. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited GRSE. Conceived and designed and built indigenously, हमने खुद बनाया है. The commissioning of this ship completes the addition of another chapter to the nation's Make in India initiative and indigenization efforts in the field of warship design and construction. Named after Tihayu Island. Tihayu एक island है जो कि presently हम इसको बोलते हैं कच्चल Island, जो कि in the Nicobar groups में है. आप देख सकते हैं ये है कच्चल Island. Small सा दिख रहा होगा. Okay, the ship is capable of operating in shallow waters at high speeds and is equipped with enhanced firepower. Built for extended coastal and offshore surveillance and patrol, the warship is fitted with advanced MTU engines, water jet propulsions, and latest communication equipment.
INS तिहायु की मेजरमेंट देखा जाए तो ये 49 मीटर्स कैन अचीव स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ 35 नॉट्स। ओके, ये 320 टन का है। एक लास्ट ये हमारी न्यूज़ है, स्मार्टर रेलवे स्टेशंस। A memorandum of understanding has been signed between the Urban Development Ministry, हमारे urban development के लिए, and the railways to redevelop railway stations. Railway stations को redevelop करने के लिए, and the surrounding areas under the smart city plan. To begin with, 100 railway stations and adjoining areas of 300-800 acres would be redeveloped in the smart cities and the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation Amrit Cities Plan. तो अमृत सिटीज़ में हमारी 102 सिटीज़ आती है जो कि 5 स्टेट से होगी। इसमें 5 स्टेट्स आते हैं, हरियाणा और फिर हमारा वेस्ट बंगाल, उसके नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, और सबसे डाउन में फिर केरल एंड तेलंगाना। तो ये हमारे स्टेट्स आते हैं। इसमें से हमारे सिटीज़ 102 सिटीज़ हैं। और इसमें अटल एक्चुअली अमृत में ये देखा गया है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें सीवरेज के नेटवर्क्स अच्छे करने हैं, रोबस्ट करने हैं, वाटर सप्लाई अच्छी रखनी है। और अमृत में 50% जो कंट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट कॉस्ट की वो यूनियन गवर्नमेंट करती है बियर, एंड रेस्ट 50% जो है वो अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ करती है, अर्बन एंड स्टेट लोकल बॉडीज़ भी करती है। ओके, At present, railway stations in 10 cities would be taken up for the redevelopment. 10 cities के रेलवे स्टेशन लेके जाएंगे with the involvement of National Building Construction Corporation (NBCC). और इसमें 10 cities कौन सी है? वाराणसी, सराय रोहिल्ला जो कि दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, जयपुर, कोटा, थाने, Margao, that is in Goa, Tirupati and Puducherry. Countries like हमारी countries जैसे जर्मनी है, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके एंड बेल्जियम। जर्मनी, फ्रांस ये हमारे यूरोपियन, देन जापान एंड साउथ कोरिया के हमारे चाइना से लगे हुए, एंड देन यूके एंड बेल्जियम have shown interest in the redevelopment of railway stations. The scope of the MOU will be extended to over 500 cities in time. The cost of redeveloping about 500 acres in the smart city plan of 60 approved cities is approximately कितना होगा? 60 approved cities का हमारा हो जाएगा 1500 crores. The validity of the memorandum of understanding is 5 साल के लिए है and can be extended with the consent of both the ministry, जो कि है Urban Development Ministry and Railway Ministry. So thank you.